Hello everyone, welcome to Arpita Sharma classes. I am Arpita Sharma, your educator, and today we are starting with the Hindu news analysis, that is for 1st of April 2021. Now daily we are going to read the newspaper. We are going to study the most important topics and most important articles from the newspaper, and we are going to analyze them. But some days when the newspaper analysis will not be uploaded, make sure that you read the newspaper yourself also. Okay, so do not be dependent on the lectures. Use these lectures as a tool to know how to study the newspaper yourself. The class PDF will also be uploaded on our Telegram channel, that is Simplifying UPSC with Ease. In the description box below the video, the link is also given of the channel. And if you cannot get redirected towards the channel, don't worry. You just have to download or install the Telegram app, and then in the app you have to in the search option you have to just type Simplifying UPSC with Ease and you will get to the channel. Okay, so class PDFs you will be getting it over there. Let's start this particular analysis without any delay. So the first very important and a very shocking article in today's newspaper is that government has sharply cut the rates on small savings instruments. Now when we talk about this particular article, we need to know what are small saving instruments. सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि ये small saving instruments होते क्या हैं आखिर, तभी हम जान पाएंगे कि रेट कट का क्या असर पड़ा है इसके ऊपर. ठीक है, so let us understand that when we talk about small saving instruments, you should know that these instruments, ये जो small saving instruments है, it's a basket of investments or instruments which have total 12 instruments. इसके अंदर ना कुछ total 12 investment options होती हैं. ठीक है, for example, we have saving deposits, we have your NSC, National Saving Certificate, PPF, Public Provident Fund Scheme, KVP, that is Kisan Vikas Patra. We have Sukanya Samriddhi Scheme. So these are part of the small saving instruments. Okay, and the government, it resets the interest rate at the beginning of every quarter. हर क्वार्टर के स्टार्टिंग में गवर्नमेंट क्या करता है, ये स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स है, इनके इंटरेस्ट रेट्स को रीसेट करती है गवर्नमेंट. Theoretically, since 2016, interest rate resetting has been done based on the yields or income of government securities of the corresponding maturity with some spread on senior citizens also. However, in practice, interest rate changes are made considering several other factors. So here, the government has sharply reduced the rates on all small saving instruments for the first quarter of 2021. The rate of return on PPF is down from 7.1% to now 6.4%. Similarly, the rate of return on senior citizen saving scheme, it is now 6.5%. Earlier it was 7.4%. Again, जो आपके सेविंग डिपॉजिट्स हैं और ज्यादा, वैसे ही 4% माशाल्लाह रेट था, अब 3.5 कर दिया है. ठीक है, द हाईएस्ट रिटर्न एट दिस पॉइंट इज इन दी सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम, जिसमें अभी 6.9% है फिलहाल रेट. ओके, दैट इज द हाईएस्ट. नाउ व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ दिस रेट कट. इस रेट कट का इम्प्लीकेशन क्या है, असर क्या पड़ा है, ठीक है, क्या पड़ेगा, ये समझ लेते हैं. See, the fall in small savings rate comes in the backdrop of a similar reduction in overall deposit rates by commercial banks. Small savings have emerged as a key source of financing the government deficit, especially after COVID-19 pandemic, because of which there was balloon effect on the government deficit, necessitating a higher need for borrowings. So while the government resets the interest rate on small saving instruments every quarter, this round of rate cut assumes importance because government is now keen to lower interest rate ताकि borrowing plans easy हो जाए. ठीक है, growth को increase करने के लिए. Government plans to borrow 12.05 lakh crore in 2021-22 on the back of record gross borrowing of 13.71 lakh crore in 2020-21. So here high small savings rates have been cited by central bank और RBI as major barrier. Small savings rate instruments के रेट को कम करके borrowing को increase किया जा सकेगा. ठीक है, इससे क्या होगा, पॉलिसी रेट को कट किया जा सकेगा, जिसको बैंकिंग सिस्टम में then they will be transmitted. Okay, so this was the news first page पे जो आपका आर्टिकल था. Coming on to the next important article, Pakistan allows import of cotton and sugar from India. So partially reversing a 2-year-old decision to suspend all trade with India, Pakistan has announced that it would allow the import of cotton and sugar from across the border.
अब फाइनली क्या करेगा कि कॉटन और शुगर के ट्रेड पे बैन लगा रखा था, इसको रिस्ट्रिक्ट किया हुआ था, फाइनली इसको अब दे आर अलाउइंग इट. Pakistan's decision to suspend this bilateral trade with India in August 2019 was because of the constitutional changes which were being made in Jammu and Kashmir. जम्मू एंड कश्मीर में जो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आ रहे थे, आर्टिकल 370 को अमेंड करने की बात हो रही थी, जम्मू एंड कश्मीर को रीऑर्गेनाइज करने की बात हो रही थी, उसके चलते पाकिस्तान ने इस ट्रेड को सस्पेंड कर दिया था. ओके, एंड अंडरलाइंग रीजन वाज फॉर सस्पेंडिंग दिस ट्रेड वाज 200% टैरिफ इम्पोज्ड बाय इंडिया. इंडिया ने कॉटन शुगर पे 200% का टैरिफ लगाया हुआ था, तो ये सेकंड रीजन था. ठीक है, नाउ हियर द ट्रेड नाउ from 2019 till today the trade had suffered very greatly. Now Pakistan has removed the suspension. So India's exports to Pakistan dropped nearly 60% between 2019 to 21. Imports भी गिरे थे, exports भी गिरे थे. Finally अब situation थोड़ी control में आ सकती है. Now this decision by Pakistan to allow the trade of these selected items, cotton and sugar, it will gradually lead to restoration of normalcy in India-Pakistan trade also. This is the right time for India also to explore reduction in 200% import duties, because of which Pakistan was initially hesitant. ठीक है, and this move or this step taken by Pakistan, it has raised hopes for further measures. ठीक है, for example we have Indus Water Commissions, right, the Indus Water Treaty that we have signed, we have disputes at the line of control, so we might Pakistan also might rethink about solving those disputes as well. Okay, coming on to the next important article, food sector incentive gets cabinet nod. So Union Cabinet has approved a production linked incentive scheme for food processing industry. Now time and again I have explained to you what is a production linked incentive scheme. Today also we are going to again look at this particular scheme. आज भी थोड़ा सा स्कीम की तरफ देख लेते हैं ताकि आपको समझ आ सके. First of all let us understand the article. यूनियन कैबिनेट ने क्या किया है, फूड इंडस्ट्री में, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में कुछ 10,900 करोड़ का आउटले तैयार करके प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम अप्लाई किया है, यानी कि अप्रूव किया है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर्स के लिए. ठीक है, PLI स्कीम क्या होता है, दिस पर्टिकुलर स्कीम इट एम्स टू गिव द कंपनीज इंसेंटिव्स. इसका एम होता है कि कंपनी को इंसेंटिव्स दिया जाए. ठीक है, किस बेसिस पे, ऑन इंक्रीमेंटल बेसिस, ऑन द इंक्रीमेंटल बेसिस. ठीक है, इंक्रीमेंटल बेसिस कैसे, जैसे कि सेल्स में बढ़ोतरी होती है तो उनको इंसेंटिव दिया जाएगा. ठीक है, और प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड, जो मैन्युफैक्चर किए डोमेस्टिक यूनिट्स में, उस पे यील्ड ज्यादा आ रहा है तो उस पे इंसेंटिव दिया जाएगा. सो दिस स्कीम इनवाइट्स फॉरेन कंपनीज टू सेट अप यूनिट्स इन इंडिया, but it also aims to encourage local companies to set up or expand the existing manufacturing units and also to generate more employment. Okay, and cut down or reduce in the country's reliance on imports from other countries. And this was launched in April 2020. ये जो production linked incentive scheme है, इसको April 2020 में launch किया गया था, ये आपको याद रखना है. ठीक है, initially it was launched for large scale electronics manufacturing sector. Now over here the objective of the scheme is support creation of global food manufacturing champions, strengthen select Indian brand for food products, increase employment opportunities, ensure remunerative prices of farm produce and higher income to farmers as well. Now on which areas this scheme will be applicable, कहाँ कहाँ ये applicable होगा, देखो आपको ये याद रखना है that here the scheme would cover ready to cook and ready to eat foods. फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज पे जाएगा ना, तो जो रेडी टू कुक जो पैकेज फूड होते हैं उस पे, प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं उस पे एप्लीकेबल होगा. इट विल बी एप्लीकेबल टू प्रोसेस्ड फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मरीन प्रोडक्ट्स, मोज़रेला चीज एज वेल. ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स विल आल्सो बी कवर्ड, एग प्रोडक्ट्स, पोल्ट्री मीट, ये सब कवर होगा इसमें. एंड दिस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम वुड फैसिलिटेट एक्सपेंशन ऑफ प्रोसेसिंग कैपेसिटी. राइट, पॉइंट क्लियर हो गया. Now the next important article, a plea in Supreme Court against uniform civil law on divorce and alimony. So here first let us understand what is this news all about. So there is a petition which has been filed. देखो M लक्ष्मीकांत में एक चैप्टर है आपका, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के ऊपर, PIL के ऊपर, वो चैप्टर जरूर पढ़ना. ठीक है, because these petitions are always in news, they can ask you questions. So a petition has been filed in Supreme Court against blatant attempt to take away the fundamental right of Muslim women to practice their religion in the disguise of providing uniform law across all faiths.
fundamental right of a Muslim woman to practice their religion in the guise of uniform law, right? That has been, the petition has been filed on this topic, that they are taking away the fundamental right, ये बोलकर कि हर faith में across every religion, every faith, there should be uniform law. You cannot misuse the fundamental right of people. Petitioner also has asked the Supreme Court to hear her before deciding whether a uniform civil law for divorce or maintenance and alimony will leave Muslim women like her better off or not. ओके तो यहाँ पर बात होती है लास्ट दिसंबर की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अग्री किया था टू एग्जामिन एडवोकेट A.K. उपाध्याय प्ली फॉर सिंगल लॉ कवरिंग डिवोर्स. यूनिफॉर्म लॉ की बात हो रही है ना, कि एक सिंगल लॉ होना चाहिए जो हर फेथ के, हर मजहब के इंसान को कवर करे, ठीक है? बिकॉज व्हेन देयर आर वेराइटीज ऑफ लॉज गवर्निंग द फेथ, डिफरेंट फेथ्स, then there is no uniformity, no you can say equality, right, among people. So that is why there was demands on uniform law. Now here last December Supreme Court agreed to examine this demand, and A.K. Upadhyay argued that laws governing them in certain religions discriminate and marginalize women. So there is a need for a uniform law. Existing anomalies, or you can say faults, varying from one religion to another, they are violative of the right to equality article 14 and right against discrimination that is article 15. तो जो laws अभी आने चाहिए divorce पे, maintenance पे, alimony पे, वो gender neutral होने चाहिए and religion neutral होने चाहिए. Gender neutral तो होंगे ही, religion neutral भी होने चाहिए, right, in order to protect the fundamental rights of people. So here you can understand, let us understand status of personal law in India. Right now personal law का क्या status है? First point for prelims, it is under concurrent list. Okay, ये जो आपका सब्जेक्ट होते हैं ना, मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, ये कंकरेंट लिस्ट में. ओके, एंड हिंदू पर्सनल लॉज हैव बीन बाय एंड लार्ज सेक्युलराइज्ड एंड मॉडर्नाइज्ड स्टैट्यूटरी इनैक्टमेंट, राइट, दैट इज वी हैव हिंदू मैरिज एक्ट 1955, जो पार्लियामेंट एक्ट पास करता है, उससे हम सेक्युलराइज करते हैं हिंदू पर्सनल लॉज को. वहीं अगर हम मुस्लिम पर्सनल लॉज की बात करें, they are still primarily unmodified because they are still governed under Shariat law of 1937. थोड़ा इनका जो approach है traditional है. Apart from it, Christians and Jews, they are also governed by different personal laws. Then we have Article 142. Article 142 provides unique power to Supreme Court to do complete justice between parties at dispute. राइट, जहां पर कोई स्टैचू या कोई एक्ट या कोई लॉ नहीं हेल्प कर पाता है डिस्प्यूट रिजॉल्व करने में, वहां आर्टिकल 142 का यूज करके सुप्रीम कोर्ट डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर सकता है. वहीं एलिमनी की अगर बात करें, सेक्शन 125 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, इट अप्लाइज टू ऑल कम्युनिटीज, lays down the provision for maintenance of wives, children and parents if they do not earn enough and reasonable means to maintain themselves, to survive. Okay, पॉइंट क्लियर हो गया? तो इस सेक्शन के अंदर, सेक्शन 125 के तहत, इवन अ वाइफ हु हैज नॉट डाइवोर्स्ड हर हस्बैंड हैज द राइट टू गेट मेंटेनेंस. मान लीजिए वो सेपरेट होके रह रही है, डाइवोर्स नहीं लिया है अभी, सेपरेटेड है, तब भी उसके पास राइट है कि वो मेंटेनेंस डिमांड कर सकते हैं, इवन इफ शी इज नॉट सेपरेटेड, शी इज नॉट डाइवोर्स, बट स्टिल शी हैज द राइट टू आस्क फॉर मेंटेनेंस ऑफ हरसेल्फ एंड हर किड्स फ्रॉम हर हस्बैंड. That is alimony. That is the section governing alimony that you have to remember for prelims, and it is part of Code of Criminal Procedure 1973. Okay, so ये थी आपकी आज की न्यूज. Now before we end up the session, here's a small announcement for all of you. New batches have been started by Unacademy from 31st March, and we have a mega subscription offer which is in existence till today only. सिर्फ टिल अप्रैल 1 तक ये जो मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर है ये एग्जिस्टेंस में रहेगा, ठीक है? इन दिस मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर, इफ यू सब्सक्राइब टू अनअकैडमी प्लस टुडे, 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन इफ यू टेक, यू विल बी गिवन द access to the subscription, or your subscription will be valid till July 31st 2022 or prelims 2022, whichever is later. Now why am I saying whichever is later? Because last year प्रीलिम्स गॉट पोस्टपोन्ड, अक्टूबर में हुआ था ना. तो जब तक इस सब्सक्रिप्शन का फायदा ये है, द बेस्ट पार्ट ऑफ द सब्सक्रिप्शन इज दैट till the time you are not giving your prelims, that means till the time the prelims is not being conducted, you can access all the courses if you take 1 year subscription today. Till prelims 2022 your subscription will be valid. जुलाई 31 तक तो आपको गारंटीड मिलेगा सब्सक्रिप्शन, पर मान लीजिए प्रीलिम्स 1% चांस ले लेते हैं कि पोस्टपोन हो जाता है, तो जब तक आपका प्रीलिम्स नहीं हो जाता ये सब्सक्रिप्शन वैलिड रहेगा. एंड दिस ऑफर इज स्टिल टुडे, ये सिर्फ आज तक का, अभी तक का है. यू कैन ऑल्सो गेट 10% डिस्काउंट इफ यू यूज कोड अर्पिता 10 ऑन योर सब्सक्रिप्शन. आई हैव गिवन यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो द वीडियो.
take the best advantage of this offer. Use code ARPITA10 to get 10% discount and take your subscription for 1 year today. This is going to transform your journey, entire journey. So this was all for today. I hope you enjoyed the lecture. Also the class PDF will be uploaded on the Telegram channel. Don't worry about it. Class का PDF भी आपको download वहाँ पर uploaded मिल जाएगा. टेंशन वाली कोई बात नहीं है. On this note, we are wrapping up the session. Thank you everybody for participating in the class.